be sharing कि I'm Shri Priya. I came to Japan as a MEC scholar और मैंने अपनी मास्टर्स करी थी इंफॉर्मेशन साइंसेस में. ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर. उसके बाद मैं एक स्टार्टअप के साथ काम करी थी एंड द इंटर्नशिप कॉन्ट्रैक्ट वाज 1 year. Unfortunately, they closed their office last week, so I am officially unemployed. जब इंटर्नशिप पे थी तब भी मैं जॉब हंटिंग कर ही रही थी. बहुत सारे कंपनीज के लिए ऐसे था कि लास्ट स्टेज तक गया, फिर दे वर लाइक दैट दे आर लुकिंग फॉर समबडी मोर एक्सपीरियंस्ड. आई एम गोना बी शेयरिंग कि मैं जॉब हंटिंग जापान में कैसे कर रही हूँ एंड इफ दिस इज हेल्पफुल प्लीज जॉइन मी. एंड सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी हैप्पी व्लॉग. Welcome to my channel, and if you're new here and if you're wondering then how did I come to Japan, so please watch my other videos. There's a whole mixed playlist I've covered, and yeah, let's do this. Let's go. I'm going to first update my job tracker. I am using Notion for this. और पिछले कुछ महीनों से जो भी कंपनीज के साथ मैंने डिफरेंट स्टेजेस पे गया तो आई लाइक टू कीप ट्रैक ऑफ एवरीथिंग बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी मेसी. आई एम सॉर्टिंग माई कंपनीज थ्रू डिफरेंट स्टेटस, तो दैट इज़ लाइक वेटिंग फॉर रेफरल, वेटिंग फॉर अ फॉलो अप फ्रॉम द कंपनी. If I've submitted the resume, then which round, or if the position has been closed, I have been rejected, या फिर the company just ghosted me. To be very honest, ghosted is the worst. But आज का हमारा goal है to kind of update the Notion tracker and then look for new positions. मैंने अपना मास्टर्स इकोनॉमिक्स और डेटा एनालिटिक्स में किया था. आई एम लुकिंग फॉर ऑल पोजीशंस रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, then data analytics, business intelligence, whatever really works because I don't have a choice at the moment. Yeah, so okay, I'll walk you through my to-do list pehle. So the first goal is to update the Notion tracker and then look for job postings. After that, I'm trying to upskill myself. So we'll do some lead code and SQL. Usually my interviews में Python या SQL ही पूछते हैं. That is the first technical round. I also have to reply to some people on LinkedIn जो they have reached out to me and kind of follow up with people for referrals, and I'm gonna try my best to record everything I can. Okay, one thing you can do when you're looking for jobs in Japan, तो LinkedIn तो है ही, but what I do is I go for Tokyo Dev and I go for Japan Dev. What I really like is कि उनका interface बहुत simple है और उसमें there are filters that you can choose. तो when I choose like no Japanese required, it shows me, and then I can also select my experience. As you can see, like there are only 5 jobs available on Tokyo Dev, and I'm gonna go through all of them and let's see कि हम किस में apply कर सकते हैं कि नहीं. तो I wanted to give you a little update. कल मैं बहुत सारे job boards देख रही थी and I was able to find a total of 9 jobs including the jobs in Japan and 100% remote jobs जिसके लिए I will be applying today. तो for each job I like to customize my resume. मैंने अपना रेज्यूमे थोड़ा बहुत एडिट ऑलरेडी कर रखा है क्योंकि आई हैव बीन जॉब हंटिंग फॉर द पास्ट वीक्स. सो आई वांटेड टू शो यू
हाउ डू आई कस्टमाइज माई रेज्यूमे फॉर ईच जॉब डिस्क्रिप्शन, और मैं चेक कैसे करती हूँ कि उसका ओवरऑल ATS स्कोर क्या है. आई ट्राई टू सर्च फॉर रेजी. दिस इज़ resume builder. ये you can tailor your resume first and then upload it here. और यहाँ पे ऑन द राइट मैं इंक्लूड कर सकती हूँ जो मेरा जॉब डिस्क्रिप्शन है. तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल नीडेड और अदर रिक्वायरमेंट्स ये सब कॉपी करती हूँ एंड आई ट्राई कि ये 90 से ऊपर आए. सो राइट नाउ इट्स 93 एंड देन इट्स गोना गिव मी कि can I include these keywords. So looker में मेरा experience नहीं, I'm gonna say no. And then Google Analytics also no, Google Ads also no, Meta Ads also no. You can also explore your Resi score it, so it tells you जो भी तुम्हारे रेज्यूमे में कमी है. आई ट्राई कि जितना हाई स्कोर हो सके उतना बेस्ट है, स्पेशली अगर आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो जिसमें रेफरल नहीं है. आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस टेक्निक एंड इससे क्या होता है कि I apply to less number of jobs but I do get more calls. I think in this current job market I've learned that quality is more important than quantity. Guess who decided to take a shower and then go for badminton later on. Krishna. अभी ख़त्म हुआ है इंटरव्यू. आई थिंक आई डिड ओके. इंटरव्यू ओवरऑल स्मूथ था एंड आई वांटेड टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अपडेट. तो मेरे फॉर कंपनी ए मेरे 4 बिहेवियरल राउंड्स हुए. एक्चुअली उनमें से एक टेक्निकल राउंड था और 3 बिहेवियरल राउंड थे एंड ऑल ऑफ देम आर ओवर एंड दे गोना टेल मी बाय द एंड ऑफ दिस वीक और बाय नेक्स्ट मंडे. तो इस इंटरव्यू में 4 में से 3 अच्छे गए. ठीक है, 3 में लाइक द कॉन्वर्सेशन काइंड ऑफ फ्लोड और वो सब नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी थे, तो लाइक कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ था. फॉर 1 person that was a technical interview. I think that's completely on me. I panicked. और the questions that were there, like I think 2 SQL question and then 1 Python question. So I was able to do 1 SQL and 1 Python and then we did not have enough time. Now it really depends कि वो चारों लोग बैठ के क्या बोलते हैं. If like they're really concerned about the technical part, then I don't think I'm gonna get it. I think I will be very sad if I don't get it, but I'm not gonna panic abhi. I'm not gonna panic because we have 5 days until I hear back. So we're gonna enjoy and we're gonna apply to more companies and we're gonna try to relax. सारे interviews खत्म हो गए हैं और इस हफ्ते मेरी कोई भी interview नहीं है. So I'm going out today and this is my makeup and I'm gonna show you how I look in just a moment. This is much better. Okay, so I'm going out today and this is my look. I'm wearing this cute summer top from Uniqlo. These pants are also from Uniqlo. Okay, let's go. Good morning. I just wanted to give you a little update. I woke up to a rejection today from company A. I kind of knew कि होने वाला है और
मैंने शायद पहले भी बोला था कि 4 में से जो लास्ट के 4 बिहेवियरल राउंड इंटरव्यूज़ थे, उन 4 में से 1 अच्छा नहीं गया था और बाकी 3 अच्छे गए थे, और जो 1 अच्छा नहीं गया था दैट वाज़ एसक्यूएल। इन दैट मोमेंट आई पैनिक्ड एंड आई कुड नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। मैंने सबसे ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन नहीं दिया किसी भी क्वेश्चन का। तो I knew कि this is one of the biggest tech companies in the world and they're looking for somebody who's already perfect, and I wasn't. So today when I got the rejection email, I also got thoda sa feedback, and the feedback was that although my behavioral rounds went well and they were as per their expectations, but my SQL skills are something that I need to work on. They've asked me to reapply when I feel confident in my SQL skills. So I'm gonna do that. I'm gonna practice SQL. I think I'm gonna do more mock interviews. And yeah, I don't know how soon can I apply again, but yeah, it sucks. I don't know what else to say. I don't know how people do it. For me, rejections always seem like a failure, like a failed. It's very difficult to not associate it with your self-worth and with your confidence. Um, so yeah, it sucks. I don't